हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 11 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस डिफरेंट क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 8 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पैसेज इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर altered the economic and political situation in India. Clear? It led a huge rise in the defense expenditure of the government of India. Clear? The government in turn increased taxes on individual income and business profits. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. Clear? Now let's discuss question answers based on this passage. First question is, what altered the economic and political situation in 20th century in India? Options are Hindu-Muslim riots or First World War or British rule. Answer is First World War. First World War altered the economic and political situation in India in 20th century. Next question is, what led to sharp rise in prices? Options are increased military expenditure or high demand for war supplies or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. Increased military expenditure as well as high demand for war supplies. Both were the reasons for sharp rise in the prices of basic requirements, which created lot of difficulties for common people. Next question is, which group reaped fabulous profit during war? Options are peasants or business group or educated group. Answer is business groups, because of the demands of supplies in other countries also, India as well as other countries. So the business group reaped fabulous profit by supplying those materials. Next question is, Indian industries dash during war. Options are expand or ruin or decline. Answer is expand. During war, because of the rise in demand, industries growth in a large scale. So Indian industries also expand during war. That is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।